you, not for the batch, na? So same thing we'll be doing again, sir. हाँ, I mean, आपको हमने दूसरे बैच में रख के केमिकल काइनेटिक्स करा दिया था, अदरवाइज बाकी लोग का नहीं हुआ, आई गेस, राइट? रचिता, मीर, फादिल, Okay, sir. जून में, आई थिंक दोज हु जॉइंड आफ्टर जून दे। आइडियली एक बैच में 2 बार नहीं होता, लेकिन फिर भी चलिए। गाइस प्लीज इन द चैट 1 or 2, व्हाट वुड यू लाइक मी टू स्टार्ट, 1 or 2, जल्दी जल्दी मैसेज करें। यू हैव टू सेंड इट टू, ठीक है, ओके फिया, ओके डेबोरा, ओके मीर, okay, Arisa is also here. Arisa, choose one or two chemical kinetics या coordination compound in the chat. आप आंसर चैट में डाल दीजिए 1 या 2. Okay, sir. You have to send it to Salim. Don't send to Learnivio, Alisa. Okay, so coordination compound has 1. These are the votes. Okay, so only Mir is asking to do chapter, I mean chemical kinetics. Everyone else is asking me to do chapter 2. Rachita is nota, and Jo Marzi कीजिए sir. Okay, fine. So we will start coordination compounds. Now, the story of coordination compounds starts with a scientist, as usual, whose name is Werner. He was doing a few experiments. Okay. Now, the experiments that he was doing was he was reacting a few species. So you will just see, don't write anything. He had cobalt chloride, and when he reacted it with excess of NH3, and later on he found out that the minimum amount of NH3 that he requires is 6 moles of NH3 for each mole of COCl3. When he reacted this, he got a yellow color compound. Now, after that, when he reacted the same COCl3, but he only changed the ratio of ammonia, that is 5 ammonia atoms or 5 ammonia molecules, then he got a purple color compound. Assalamu alaikum, Safia. Am I audible? Safia, am I audible? Walaikum assalam, yes, sir. Safia, we have started coordination compounds, okay? Okay, You sir. missed the votes. But still, अगर आप दूसरे chapter vote करते, तो ही coordination जीतता. It was having maximum votes. So I was saying that it started with a few experiment done by Werner. His full name was Alfred Werner. When he reacted cobalt chloride with 6 ammonia molecules, he got a yellow color compound. But when he just changed the ratio of ammonia, ऐसा नहीं हुआ कि कम मिला. He did not get less amount of product. Rather, he got a different product, which was purple in color. And when he reacted COCl3 with 4 moles of ammonia, then he got green color complex, a green colored compound. But sometimes when he reacted COCl3 with 4 ammonia, then he sometimes also got a violet color compound. Now, obviously, all this yellow, purple, green, and violet, all of these compounds are different. Now, in order to see more about it, he further reacted this yellow colored compound with AgNO3, silver nitrate. When he reacted with silver nitrate, now obviously this yellow colored compound would have 3 chlorines and 6 ammonia atom molecules.
So he was seeing that whether this chlorine that he is having, this chlorine, it is in chloride ion form or it is covalently bonded. है ना, जैसे कि अगर आप देखिए CCl4 लीजिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, then in this case this chlorine atoms are covalently bonded. These are not chloride ions. But if you are having NaCl, then this is chloride ion. So he was testing that whether we are having a chloride which is covalently bonded or the chloride is ionically bonded. It is present as an ion. So he found that he is getting 3 moles of AgCl. This suggested that in this yellow colored compound, there were 3 Cl negative ions. That is why he is getting 3 AgCl. When he reacted AgNO3 with the purple color compound, he only got 2 moles of AgCl. What it would mean? How many Cl negatives are there in the purple color compound? Tell me, guys. क्या मतलब होगा इसका? How many Cl negatives are there in purple color compound? Two, sir. 2 Cl. 2 Cl negative ions will be there. And when he reacted with the green color compound, he got only one. He got 1 AgCl, and that means 1 Cl negative was there. And for here also, he got only 1 AgCl, and that means there was only 1 Cl negative ion present. Now these are observations, है ना? अब इस observation से कुछ conclusions निकाला जा सकता है. What conclusion can be made is that, see, the 6 ammonia atoms are covalently bonded. These are not taking part in any reactions. That means our molecule, the first molecule that we saw, it is having a formula something like this: cobalt, which is covalently bonded to 6 ammonia molecules, and the 3 chloride ions are independent and they are present as chloride ions. Okay, 1, 2, 3, 4. These are the experiment. Topic इसमें जो बाद में लिखिएगा, अभी मत लिखिएगा. It is Werner's theory. And the chapter's name you can write. What is the chapter's name? It is coordination compound. Yeah? Coordination compound. Okay. Now, with this type of compounds, he was very intrigued by this type of compound. That there is a compound which is having covalent bonds, and there are what? And there are coordinate bonds also. Yusuf is here. Yusuf, आपने स्टार्टिंग की क्लास नहीं किया ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की? आई गेस, आई थिंक एंड की क्लासेस की हैं आपने. Yusuf. हाँ, Yusuf. Were we doing chemical kinetics today? Yeah, but we had a vote. You are late. तो पोलिंग vote बंद हो गया फिर. So the votes were like this. The options was coordination compounds or chemical kinetics, and most of the people, they voted for coordination compounds. That's why I had to start coordination compounds. Okay. So अब आपको ये 2 बार आपको हो जाएगा. दूसरे बैच में भी आपने ये किया था. अच्छा, आज शायद फर्स्ट क्लास तो आपने नहीं किया होगा, आई गेस, राइट यूसुफ? I don't think so. है ना? So आज कीजिए क्लास, फिर हम देखते हैं आगे का आपका, है ना? So this is the first class of coordination compound. हाँ, फर्स्ट क्लास है. Okay. Now, when Werner he got to know about this, he said that देखिए, generally when we make compound, we always talk about the valencies, ना? कि sodium की valency 1 होती है, chlorine की valency 1 होती है. That is why it is making NaCl. Mg has valency of 2 and Cl is having 1. MgCl2 बनता है. So he said that these type of compounds, because they are having covalent bond as well as coordinate bond, so there will be 2 different valencies. एक primary valency होगी, and then there will be a secondary valency. Okay, and from this particular structure या फिर formula से आपको ये पता चल जाएगा how many independent Cl negatives हैं आपके पास. Number of independent Cl negatives, है ना? So see, in the first case, how will we gain the primary valency? You need to look at the charge on the metal atom. So cobalt is a metal. NH3 ammonia. Ammonia is a neutral molecule. Pani, water, ammonia, all of these are neutral molecules. So these will have 0 charge.
3Cl. So each Cl will have one negative charge, and you can see that -3 is the charge overall in the Cl. So cobalt के पास +3 charge होना चाहिए. So the primary valency will come out to be +3. And secondary valency is the number of covalent bond it is making. So there are 6 ammonia atoms and they are making 6 covalent bond with it. So the secondary valency is going to be 6. Secondary valency is going to be 6. Now this is going to be the same, but the number of independent chlorines hai, yahan pe there are 3 independent Cl negatives. In the second structure, the something like this. You have cobalt, which is having 1 chlorine, and there are 5 NH3 and Cl2 on the outside, because we are having only 2 chlorine atoms which are independent. There are 2 chloride ions. Now the primary valency here also it will be equal to +3 only. Why? Because see, this Cl is -1, this 2Cl, that means it's just -2. -2 and -1 will be -3. In order to counter that, cobalt should have +3. So cobalt is still having +3. And the number secondary valency will also be 1 chlorine and 5. So 5 + 1 will be 6. But number of independent chlorine ions or chloride ions will be. In the third and fourth case, we will be having a complex which will look something like this. Cobalt. There are 2 chloride ions inside and 4 NH3 and only 1 chlorine outside. That we can understand because it is making 1 AgCl. Now the primary valency will be still +3, the secondary will be still 6, but the number of independent chlorine will be 1 Cl negative. Okay, so this is some observations and conclusions from the Werner's theory and Werner's experiment. You can write this down. We are going to do a few questions here, है ना? पहले इसको लिख लीजिए. All of you understood this part, na? Yes or no? Please tell me. Like the observation, the experiment, the observation, and then the conclusion. Yes or no? Please tell me, guys. The main conclusion that you have to understand about is this number of independent chlorines, है ना? इससे आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है. हमारे पास पहले वाले का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे 3 क्लोरीन और 6 NH3 है. Now this 3 chlorines, all of these 3 chlorines are outside. The second case, out of this 3 chlorines, we are having one inside and the 2 other are outside. यहाँ पे 2 अंदर हैं और 1 बाहर है. ठीक है? So ये आपको ज्यादा समझना जरूरी है. Please write this down. Raise your hand once you're done. By the way, Safia, you're still in India? Yeah, you went back. I'm still in Yes, India, sir. sir. अच्छा, are you doing any offline things also? आपने बात की Learnivio team Not से? yet, sir. So what did they say? Oh, they said that there are no offline things. अच्छा, they just said that. Okay. Yes, sir. अभी थोड़ा संभल कर रहिएगा, दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है. Yes, sir. Is it your first time in Delhi? No, I've been here in my childhood days. अच्छा अच्छा, okay, fine. So for the Werner's theory, the third one and the fourth one, even though everything is present in the same numbers, we get green and violet instead. Why is that so? That is because this arrangement of atoms inside the molecule is a bit different there. So that is why they're having different colors.
Please raise your hand once you're done writing. Sir, it's +3 and +6, right? +6 means only 6. If I write +6, it's wrong. It would not make any sense. Waiting for Aliza, Fadil, and Fia. Waiting for Aliza and Fia. Just waiting for Fia now. Yes, sir, done. Now, see, there is an important thing regarding if you have been given a complex, then the number of ions it could give. Okay, how many ions it could give. In the first case, as you can see, all of these 3 chlorines these are chloride ions, है ना? तो ये तो 3 दे देगा, and this square bracket thing would give 1 ion. So when you have some square bracket thing and then some counter ions, some anions, आप इसको ना ऐसे treat कीजिएगा. For example, you have AlCl3. So ये Cl3 से तो आपको 3Cl negative मिल जाएगा, and this Al you can have an analogy. ये जो square bracket thing के अंदर ना complex इसको बोलते हैं. This complex part, it is just like aluminium. It is going to give you only 1 ion. So from complex, you are going to get 1 ion, and you are going to get 3 ions from the chloride. So in the first case, the number of ions that you will be getting is 4. Can you guys tell me from this complex how many ions will be getting? From this square bracket thing will be 1 ion, right? And then how many from the chloride? Guys, no idea. Tell me. The square bracket thing will be 1 ion. And how many from the chloride? कितनी chloride ions है? नहीं, साफ साफ बोलिए जरा. Mic on करके रखिए. Keep your mic on and tell the answer. And then when I have heard, I will let you know whether it is right or wrong. Then only you will turn the mic off. Tell me, what is the answer? How many chloride ions? 3. फर्स्ट में नहीं पूछ रहे, सेकंड में कितने क्लोराइड आयंस मिलेंगे आपको? 2. 2 क्लोराइड आयंस, है ना? 2 क्लोराइड आयंस हो गए और एक आयन ये कॉम्प्लेक्स वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाला. सो टोटल नंबर ऑफ आयंस वुड बी 3. 3. नेक्स्ट में टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी, देखिए ये गलती है ना, आप लोग माइक ऑफ कर ले रहे हैं. रजिता, यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस, वो प्लीज ना करें. 2 ions. अदरवाइज वो फिर सिर्फ आवाज आती, समझ कुछ नहीं आता है. ठीक है, डोंट नीड टू राइट इट डाउन कि कितने आयंस हैं यहाँ पे. इफ यू हैव स्पेस यू कैन राइट इट डाउन, अदरवाइज वो हमें एक सवाल देने वाले हैं आप लोग को. प्लीज राइट दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी आयंस पर मोल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अगर आप एक इसको लीजिएगा, टेकिंग वन Sir, ऑफ can दीस. you explain me how many ions are there in the last one? Oh my bad, 4 हमने गलत लिख दिया. माय बैड गाइस, 2 होगा. सॉरी माय बैड, 2 आयंस ओनली.
हो जाएगा ये चारों सवाल? गाइस, यस सर। है ना, स्क्वायर ब्रैकेट से एक आयन मिलता है आपको, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, यू विल डू दिस। देखिए, अगर आपसे थर्ड वाला नहीं हो पाए, थर्ड वाले में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो छोड़ दीजिएगा एंड सेंड द आंसर ऑन जूम चैट। आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस 3 minutes फॉर दिस। अच्छा, वैसे रचिता, प्री बोर्ड का Yes, sir. मतलब तो प्री बोर्ड का मतलब तो मतलब बोर्ड से पहले जो प्रिपरेशन वाली एग्जाम होती है उसमें तो सारे चैप्टर्स आते हैं ना? Well, usually, sir, but our school is like this. The school is like this. I think your school is in Abu Dhabi. अच्छा, हमें लगता था you're in somewhere in Saudi. Okay. तो सिलेबस हो गया क्या आपके स्कूल में? Well, chemistry teacher is doing the last chapter, biomolecules, and then we're done. अच्छा, बट स्टिल यू नो इट्स गुड स्कूल बिकॉज लगभग 1 महीने पहले वो आपको बता दे रहे हैं। यूजुअली स्कूल्स में इट इज लाइक 15 दिन पहले हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी 1 हफ्ते पहले बताते हैं डेट्स वगैरह, सिलेबस वगैरह। अच्छा, ऑल्सो व्हेन यू आर डन विद द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन यू विल गेट द पेपर्स, राइट? I think so, sir. Most probably, yes. है ना, so you know how to analyze it now, right? Yes, sir. If Priya has answered a few, yeah, first one is correct, second one is correct, third one is correct. अलीजा, क्वेश्चन नंबर तो लिखिए। ऐसे लिख रहे हैं यार, बताओ। ठीक है, चलिए। Okay. 31 लिखा है क्या आपने? No, But sir. okay. फोर्थ वाले में करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? रजिता, या करेक्ट रजिता, वेरी गुड। यूसुफ, यूसुफ डिस्कनेक्टेड। फादिल एंड डेबोरा। डेबोरा, ओह नो डेबोरा। डेबोरा, अच्छा गाइस, कैन यू हैव योर कैमरास एंड माइक ऑन? व्हाट इज हैपनिंग? फर्स्ट वन इज नॉट राइट डेबोरा, सेकंड वाला सही है। फादिल, व्हाट हैपेंड? फादिल, फादिल जल्दी आंसर भेजिए, इतना टाइम लगेगा, 3 मिनट हो भी गया है। सर सेंट, अच्छा चैट में देना था क्या? कहाँ भेजा आपने? अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छा, ठीक है, चलेगा चलेगा, नोट प्रॉब्लम। ओके। ठीक है, वेरी गुड, वेरी करेक्ट है। डेबोरा, सिर्फ 2 आंसर दिया आपने, इतना टाइम लगाते हैं आप। डेबोरा, नहीं नहीं, डेबोरा टर्न योर माइक ऑन, टर्न योर माइक ऑन। डेबोरा टर्न योर माइक। हाँ, बताइए। हाउ मेनी स्क्वायर थिंग्स यू आर हैविंग हियर? एक स्क्वायर से एक मिलता है ना, सो यू हैव वन स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक है ना बस आपके पास, इससे यू विल गेट वन आयन। Yes, sir. एंड हाउ मेनी क्लोराइड्स? 2, टोटल कितना हो गया? 3, व्हाट अबाउट हियर, टेल मी। सेकंड वाले में कितना होगा? 2, sir. थर्ड वाले में?
स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे करके ऐसे करो, उसमें लिखो ऐसे 1 एक, और बचा क्या, फिर अगला एक स्क्वायर ब्रैकेट से फिर से 1, कितना हो गया? 2. 2. व्हाट अबाउट फोर्थ वन? बोलो भाई। 2, sir. फोर्थ वन, हाँ 2. ऑल ऑफ यू गॉट दिस ना? सपोज समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा। हम आप लोगों को ना एग्जैक्टली आई विल गिव यू लाइक व्हाट आयंस आर प्रेजेंट, है ना? हाउ मेनी तो ठीक है, यू कैन आइडेंटिफाई, ऑलमोस्ट सभी ने Sir, सही it से will किया। be always like the complex sign would be 1 and rest of all which is outside will take that number. It's always like that. हाँ, इट इज ऑलवेज लाइक दैट। लेकिन अब जैसे SO4 है, तो आपको पता होना चाहिए SO4 इटसेल्फ इज वन आयन। अगर यहाँ Cl के बाहर SO4 रहता, तो आपको पता है ना SO4 इज इटसेल्फ वन आयन, यस और नो? Yes, sir. सल्फेट आयन होता है, राइट? उसी तरह से कभी कभी सी राइट नाउ द कॉम्प्लेक्स आयन इट इज cation, and the counter ion इसको बोलते हैं, this counter ion it is anion. Sometimes the counter ion will be cation, तो वहां पे आपके पास sometimes you will see NH4 positive, NH4 and then complex will be there. Now NH4 में 5 मत लिखिएगा, because NH4 positive itself it is a one ion, ठीक है? तो वो आपको सेंस लगाना पड़ेगा काउंटर आयन के केसेस में। बट या द स्क्वायर ब्रैकेट थिंग इज ऑलवेज वन अंटिल इट इज स्पेसिफाइड। इफ समथिंग यू आर गेटिंग, यू विल नॉट गेट इट, बट स्टिल आई एम सेइंग यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस 2 एंड देन Cl3, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही 2 बार लिखा हुआ उन्होंने, Cl को 3 बार लिखा हुआ, तो टोटल कितने मिल जाएंगे आपको? यू विल गेट 5 आयंस। मेक सेंस? यस और नो? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. है ना? ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए लाइक व्हाट आर द आयंस यू विल बी गेटिंग। इन द फर्स्ट केस यू विल बी हैविंग CO, देखिएगा प्लीज डोंट राइट नाउ, NH3 whole 5 and outside we are having Cl2. Now first of all you will remove the counter ion जो that is outside the square brackets, so you are getting 2 Cl negatives plus cobalt Cl NH3 whole 5, and what will be the charge? So here we are having 2 negative charge, so this whole complex will be having 2 positive charge. Does it make sense? Yes or no? Please tell me. यस सर। Okay, for the second, Ag NH3 whole twice inside square bracket, outside square bracket we have only one chlorine atom, so this will be Cl negative plus inside square bracket we will have Ag NH3 whole twice. What will be the charge here? Tell me guys. पॉजिटिव। Positive. How much positive? One One. positive. Positive, ठीक है। देन थर्ड को भी रहने देते हैं, फोर्थ में देखिए we have Pt Cl3 NH3 whole thrice, and then outside the square bracket we have Cl, we'll have Cl negative plus platinum Cl3 NH3 whole thrice. The charge will be still +1. Now in the third case you cannot really predict the what will be the exact charge, but the charge on cation and anion will be same, इतना हम बस कह सकते हैं, राइट? देखिएगा जरा whatever will be the charge on PtNS3 whole 4, let us suppose it is X positive, है ना? It is cation, तो पहले cation को लिखा जाता है, उसके बाद anion को लिखा जाता है. So here also you have PtCl4, this will be X negative charge. That's why they are balancing, and overall यहाँ पे कोई charge नहीं है. Does this make sense that we cannot right now, we cannot say that what will be the charge, है ना? मतलब according to the counter ion उसके हिसाब से हम नहीं लगा सकते पता, because we don't have any counter ion here. Does this make sense? X positive and X negative, yes or no? Please tell me. Aliza, Deborah, यस सर। है ना? ठीक है, write this down. Raise your hand once you're done writing.
Waiting for Aliza, Deborah, and Fia. Just waiting for Aliza now. Just waiting for Aliza. Yes, sir, done. Okay. See another question. On the basis of following observation made with aqueous solutions, write the formula and assign secondary valency to metals in the following compounds. तो ये आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? They have just given you the number of atoms, कितनी chlorine है, कितने NH3. You have to write the formula, exact formula, using this information that how many moles of AgCl it is giving when reacted with AgNO3. Now in this question, tell me which one I should do. एक हम करेंगे, फिर आप लोग फिर बाकी सारा कीजिएगा. Tell me guys, which one should I do? अरे बोलो भाई. फोर्थ वन सर. What about others? फोर्थ के अलावा बोलिए. फोर्थ थोड़ा सा मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है. फोर्थ वाला समझा दे पहले ही. ठीक है, फोर्थ वाला समझा देते हैं आप लोगों को. देखिए, फोर्थ वाला नहीं कीजिए. फोर्थ वाला ना बाद में समझाना ही पड़ेगा आपको. 1 2 3 और 5 में से कुछ बताइए. थर्ड वन. थर्ड वन. जी सर. ठीक है, थर्ड वन देख लीजिए. सो सबसे पहले आप यहाँ पे बताइए, हाउ मेनी क्लोरीन आर वी गेटिंग तीसरे वाले में. हाउ मेनी AgCl, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl वी आर गेटिंग. What is the number of moles of Please, AgCl sir. that we are having? How much? What, Fia? What did you say? Sir, it will be 0. अरे भाई लिखा हुआ है यार यहाँ पे. थर्ड वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitated when it was reacted with AgNO3. How many moles of AgCl was formed? 2. 2. That means how many independent chloride ions do we have? 2. 2 chloride ions है. 1 क्या होगा रे भाई? क्या पढ़ाने का मकसद हो रहा है भाई? बेकार है क्या पढ़ाना? 1 2 कर रहे हैं, अंदाजी क्यों बोल रहे हैं आप लोग? ये अभी तो पढ़ाया ना. The number of moles of AgCl that we are getting, that is also telling you about the number of free chloride ions. और जो free chloride ions आपको मिल रहे हैं, that much you have to keep outside. तो यो Cl2 आपने कर दिया बाहर. अंदर देखते क्या बचा. निकल. ठीक है. एंड देन बोथ दिस क्लोरीन्स आर आउटसाइड नाउ. तो क्लोरीन तो बचा नहीं. ध्यान से देख लीजिए, प्लीज लिखिएगा मत अभी. क्लोरीन तो बचा नहीं. वी डोंट हैव एनी क्लोरीन्स नाउ. ऑल द क्लोरीन्स आर आउटसाइड. What is remaining? H2O. How many H2O? 6 H2O. Now please see how I am writing the H2O. I'm giving a bracket. I'm writing H2O and then I'm writing 6. This is inside the square brackets and Cl2 is outside because Cl2 is giving AgCl. Does this make sense? Yes or no? Please tell me guys. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अगर जो किसी ने ऐसे लिखा है ना, if I see any one of you guys writing like this for any other question, तुम पकड़ के मारेंगे लगता है. अगर किसी ने ऐसे लिखा तो राइट प्रॉपरली H2O एंड देन Cl बाहर रहेगा. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस दैट यू आर सीइंग दैट इट इज फ्री, दैट विल बी आउटसाइड. और बाकी को अंदर रखना है. फिर बाकी को क्या रखना है? बाकी others will be inside. Now if they are talking about the valencies, then nickel is having 6 H2O molecules. तो यहाँ पे secondary valency हो जाएगी. Secondary valency will be equal to 6. अभी आप लोग फॉर्मूला बनाइए. Don't worry about the secondary valency. ठीक है. Try to make the formula for the other cases except the fourth one. Fourth छोड़ दीजिएगा and try to make the formula for the other cases. So can you please repeat the last point, what you said? My internet wasn't. I'm saying you need to identify the number of free chloride ions that you are having. उतना बाहर रखिएगा according to the number of moles of AgCl you are getting ना. वहां से आपको पता लगेगा कितने क्लोराइड आयंस हैं फ्री. उसको आप बाहर रखिएगा. अदर क्लोरीन एटम्स शुड बी इनसाइड.
जो भी बचा है that Yes, would be sir. inside. Okay, Yes, sir. I'm giving you guys 2 minutes. 2 मिनट के अंदर एक सवाल तो हो जाना चाहिए कम से कम, है ना? 2 मिनट के अंदर जितना होगा आप लोग भेजिएगा. It's wrong, Deborah. First one is wrong. Second one is fine. Fourth one is wrong. आप सुन ही नहीं रही हैं. I'm telling that एक तो ना आप लोग ना रिप्लाई नहीं करते हो. जब हम पूछते हैं कोई सवाल ना तब रिप्लाई नहीं आता किसी का, फिर गलत गलत आंसर आते हैं खाली. अरे बेकार है यार. माइक ऑन करें सभी लोग. टर्न योर माइक्स ऑन ऑल ऑफ यू गाइस. इसे दूसरे गणिसा वगैरह का देख लेते हैं. अलीजा नंबर लिखो यार, सवाल में नंबर तो लिखा करो. क्या है भाई? पहले वाले में कितने क्लोरीन है बताइए तो जरा. टर्न ऑल ऑफ यू टर्न योर माइक ऑन. चैट में बताओ यार, 1 2 3 करके चैट में बताओ. इन द फर्स्ट क्वेश्चन how many free chloride ions are there? The first question. लिखे लिखे बाकी लोग लिखिए. रजिता और फिया का आंसर आया. ओके, बाकी लोग बताइए. बाकी लोग फातिल का आया. ओके, तो डबरा आपने आंसर तो वैसे लिखा नहीं है. आपका आंसर तो, आपके आंसर से तो वो नहीं पता चल रहा है. या तो फिर अपनी देख के कर रही है. कैसे पता चलेगा? रजिता, फिया एंड फादिल एक एक करके बताइए. कैसे पता चलेगा कि कितने फ्री क्लोराइड आयन है? टेल मी. रजिता से स्टार्ट करते हैं. रजिता टेल मी, हाउ वुड यू टेल मी? कैसे पता लगेगा रजिता? हाउ मेनी फ्री क्लोराइड आयंस आर देयर? कैसे पता लगेगा? Sir, I'll change my answer to 1. There would only be 1 free chloride ion, right? पिया आप बताइए. नो नो, आई एम कीपिंग यू. नॉट इफ यू आर नॉट एग्रीइंग विद योर लास्ट आंसर वो बोल दीजिए नहीं. इस पिया आप बताइए. टेल मी, हाउ विल Yes, यू sir. आइडेंटिफाई हाउ मेनी फ्री क्लोराइड आयंस आर देयर?
Actually, in the complex sign, it would be like CONH3. I'm not asking that. A I'm not. covalent bond will be there. Cl3 will be outside. So 3. How do you know 3Cl will be outside? Because it's always in that format, sir. No. यहाँ पे कैसे पता चला था आपको दैट यहाँ पे 3 क्लोराइड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है? हाउ डिड यू कम टू नो दैट? The number of AgCl present. I'm asking Fia. Yes, Fia, tell me. यहाँ पे कैसे पता चला था how many here we are having 3 independent chlorines, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ से ना ये Yes. चीज कैसे पता लगी थी? बादल? It's based on the number of AgCl. तो फिर okay, so यहाँ पे you are having how many AgCl molecules? You're having only one AgCl. That means one chlorine will be outside. And inside you will be having what is remaining? You're starting with cobalt. Then what is remaining? There are 2 chlorine remaining. एक बाहर निकल गया. And you are having 4 NH3. Now secondary valency, if I talk about secondary valency, it will be 2 chlorines and 4 NH3. 4 और 2 6. For the second question, Fadil, आपको समझ में आया? जी सर. How many chlorines will be outside in the second question? Tell me, guys. 2. Cl2, and inside will be having Pd and NH3 whole 4. Now the secondary valency, here we are having 4. तो ये हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा. ठीक है. Then looking at the fifth one. Fifth one में we have there are, ठीक है, how many chlorines will be outside? Tell me, guys. 0. सर none. नन है ना, 0. अच्छा, एक ना नन आप लोग प्लीज ऑनलाइन क्लासेस में मत बोला करें, बिकॉज समटाइम्स नन साउंड्स लाइक 1, है ना. इफ यू आर अ बिट लेट इन टर्निंग योर माइक ऑन तो नन का 1 आ जाता है सिर्फ. ठीक है, तो जनरल हम बोल रहे हैं, किसी खास को नहीं. ठीक है, तो यू विल हैव Pt Cl2 and NH3 whole twice. What will be the secondary valency? Tell me, guys. अरे 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 अरे, 2 4 होगा ना, 2 Cl और 2 NH3. अब ध्यान से देखिए जरा इस वाले पार्ट को, फोर्थ वाले सवाल को. ठीक है, इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस. यहाँ पे आपके पास वी हैव HCl. Now we know that HCl is a strong electrolyte. It will be in the form of H plus and Cl negative. H plus and Cl negative. Now in fact we are having how many Cls? तो देखिए 2 HCl आपके पास, 2 H plus होगा और 2 Cl negative होगा, and there are 4 chlorines already inside. The total number of chlorines that we are having is equal to how much? It is equal to 6 chlorines, and आपके पास H plus है. So you'll first of all write H2 like this. That will be outside the coordination sphere H2, and inside we will be having Pt Cl6. Okay, so H2 is now acting as a counter ion, and we are having PtCl6. Why we are having PtCl6? Because 4 chlorine तो आ गया कहाँ से? Because we are having PtCl4 and 2 chlorine is coming from the HCl. And since it is saying 0 AgCl is formed, that means none of the chlorine atoms is outside the coordination sphere. So this is the answer for the fourth one. All of you got this? Yes or no? Please tell me. The coordination, sorry, the secondary valency in this case will also be equal to 6. Please copy this down. Let me know once you're done.
Please raise your hand once you're done. Okay. Waiting for Fadil and Fia. Waiting for Fia now. Sir, Yeah, Fadil. tell me. sir, I didn't understand the fourth one. Fourth one, you understood till here. Yes, sir. See, now we are having PtCl4 2HCl. So we are exactly having PtCl4 2H plus and 2Cl negative, right? Yes, Correct. sir. And number of HeCl kitna hai? Number of HeCl that we are getting? 0, sir. 0. Therefore, no Cl outside. Correct. Yes, sir. Right. Now there is no Cl outside. So all the Cl will be inside and 2H plus. Now this is the cation. Na? So we write first of all cation, and this complex is now becoming the anion. You got this PtCl6 because ये Cl4 और ये 2 Cl क्या हो गया आपके पास PtCl6 Cl. Yes, sir. है ना, and the cation is the 2H plus ions that we are having. तो यहाँ पे इसको H2 लिख दिया हमने. Okay, okay, sir. Okay, it is only happening because we are having HCl and HCl is a strong electrolyte. Otherwise ऐसा कोई अगर बोले ना आपको कि H2O भी तो dissociate हो सकता है H plus और OH negative में, you will say yeah it will, but the amount of H plus and OH negative will be very less compared to the amount of water molecule that we'll be having. And the case is opposite in the case of HCl. HCl may you'll be having a high amount of H plus ions and 2Cl negative rather than the HCl molecule itself. Okay, because it is a strong electrolyte, it dissociates completely. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, right next. So this is about Werner's theory. Basically, यहाँ पे इसी तरह के सवाल आपके पास आएंगे. That they can also give you like कि इसको अगर याद कीजिएगा तो number of Cl molecules that you are going to get है ना, इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे. Now next is there are some other questions also. Just give me a second. I will give you a few questions. Equal to get the question right now. Right, some important terms. ठीक है, that I can those type of questions ठीक है, छोड़िए अभी इसको. Yeah, some important terms. Now in some important terms, first of all कि आपके पास जो coordination complete होता है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है. The coordination compound is made up of complex ion such as CO, Cl2, NH3 whole 4. If I talk about this, then this whole thing inside the square bracket, it is coordination sphere, complex ion, coordination entity. बहुत सारे नाम है. This is अब उसके बाद जो होगा ना, other than the square bracket, what we say it is a counter ion.
स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो जाए दैट इज काउंटर आयन, प्लीज डोंट राइट नाउ, है ना, इसको हमको लिख लेना चाहिए अच्छे से, उसके बाद आप लोग भी सेम तरीके से लिखिएगा काउंटर आयन। नाउ इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा आपको दैट विल बी अ मेटल, अ ट्रांजिशन मेटल मोस्ट ऑफ द केसेस, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, है ना, इसको हम लोग डिनोट करेंगे CMA से, है ना, वी विल राइट दिस इन शॉर्ट CMA। then these things other than central metal atom, जो भी बचा सेंट्रल मेटल एटम्स के अलावा जो कुछ भी बचा इसको बोला जाता है लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको? लिगेंड्स। नाउ द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स बोथ ऑफ देम, इनको अगर आप मिला दें दिस होल थिंग, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी, और वी विल जनरली कॉल इट कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम इनको? कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और उसके बाकी बचा जो भी वो लिगेंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा, स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा काउंटर आयन, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर वी आर हैविंग सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। मेक सेंस एवरीवन? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज राइट। अच्छा, इसको लिख लीजिए आराम से। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसमें लिखिएगा it consists of CMA. I hope you know what is CMA. Bonded to fixed number of anions, fixed number of anions or neutral molecules via a coordinate bond, via coordinate bonds. This fragment is always enclosed in square brackets. It consists of CMA bonded to fixed number of anions or neutral molecules via coordinate bond, and this fragment is always enclosed in square brackets. ठीक है, फिर आपके पास आएगा सवाल।
अच्छा, ये हो पाएगा? एक सवाल करते बताइए। सवाल लिख लिया होगा आप लोगों ने। टेल मी, शुड आई डू वन? यस सर। पहले तो हम कंपाउंड लिखेंगे यहाँ पे। देन काउंटर आयन, देन coordination entity, then the central metal atom, and then we will write the ligands. इतना पूछा नहीं है but still. So the first compound that we are having, it is K2 PtCl4. Now you guys tell me, what is the counter ion? What is apart from square bracket? क्या है? K2. Sorry? K2. हाँ, K2, लेकिन ये 2K पॉजिटिव है ना? You have 2 potassium ions. ठीक है? Now what is rest? Coordination entity में क्या आ जाएगा? PtCl4. To balance the charge of 2K positive, you'll have 2 negative here. Correct? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Central metal atom क्या हो जाएगा? Platinum, है ना? Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. पहला वाला जो एटम होता है, लिगेंड्स क्या हो जाएंगे? We have 4 chlorines. करेक्ट है? Tell me, guys. Yes, sir. Can you do the rest? Yes, sir. Okay, please try.
Here Rajita is done. Cl में 2 माइनस मत कीजिए, 2 Cl नेगेटिव आयंस विल बी देयर, तो वैसे कर लीजिएगा, है ना, दूसरा राइटिंग। अच्छा, आपकी कॉपी छोटी पड़ गई। ligands you are writing here, central metal atom. Okay, fine Rajita. Okay, what about others? Deborah, Fadil, Fia, Alisa, send your answers. अच्छा, was someone asking me something because I had a call to take? ये कुछ पूछ रहा था क्या बीच में? नहीं, अच्छा ठीक है। If you are getting stuck somewhere ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, then please let me know, okay guys? Sir, after everyone is done, can you please explain the third one? थर्ड में आपको दिक्कत आ रही है? Well, I thought I did it wrong, but then you said I'm right. So I would like to know, I would just like to know the process of putting it. I mean, the only thing that is wrong is Cl2 negative नहीं होगा, 2 Cl negative, 2 Cl negative ऐसे होगा ना, that's the Yes, only sir. thing, है ना? Yes, sir. But then बाकी there is the Cl inside the अच्छा, compound, you right? don't have to, नहीं, that you don't have to worry ना. Okay. Coordination entity is one entity, one thing. जैसे यहाँ Okay, पे भी तो था Cl, we also had Cl here ना, so that Cl is not going to matter anymore. Okay, sir. If the Pura is done. Uh, 2K positive. So, yeah, very good, Deborah. Fine. Good. Then, yeah, it's fine. We have not written the charges, but the rest of the things are okay. In the ligands, I think you are not right. Rachita, take your ligands. देख लेते हैं. Cl and okay, that's fine. The Alisa, you have not sent the answer. Safia got disconnected. Safia कैसे disconnect हो जा रही है? Okay, Fadil. You guys, you have CrCl कैसे होगा? Central metal atom, एक atom होगा ना? So see. See here, guys. We have A2, nickel CN4. The counter ion will be 2K positive. Coordination entity will be nickel and 4 cyanide. Central metal atom
nickel, and 4 Cn. है ना? You'll have 4 Cn. Next is Cr. Then we have Cl, NH3 whole 5, and 2 chloride ions. So the counter ion will be 2 chloride ions, 2 Cl negative. अच्छा, यहाँ पे the charge will be 2 positive, है ना? Forgot about the charge. And the coordination entity will be Cr, Cl, NH3 whole 5. And this will be having 2 positive charge now. अरे यार, इसमें हमने mistake कर Sir? दिया. This is in the previous one, it will be 2 negative. Yeah, Father? Yes. Yes, sir, that's what I was. Sir. This will be 2 positive, and the central metal atom will be this chromium atom. This chromium atom, the first atom that is central metal atom. The rest of them, that means we have 1 chlorine and we have 5 NH3, 5 ammonia molecule. These are the ligands. Then we have the fourth case in which we are having K4. We have FeCN6. ये चीज बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था, Cl, है ना? तो just look into that and correct it. So here we'll be having 4K positive. The coordination entity that we'll be having is FeCN whole 6, and you will be having 4 positive charge, right? Central metal atom will be iron, that is Fe, and ligand is 6 Cn. And then in the fifth case we have 4 Yes, sorry? positive or sir, 4 my bad. positive or No, 4 4 negative. My bad, Yes, my sir. bad. We are having nickel, CO whole 4, and counter ion कुछ नहीं होगा. Coordination entity is going to be nickel, CO whole 4, and here we'll be having nickel. ठीक है. Ligands will be, we are having 4 carbon. अरे मेरा माइंड असल में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया. I was asking for like holidays. दिवाली में है, तो दिवाली में 2 दिन छुट्टियां हैं. I needed to take some extra classes in the morning of Diwali, but team is saying नहीं, आप नहीं ले सकते. तो वही I am thinking where to fit in some extra classes. So Friday most probably you will be having some extra classes. Friday, okay. Diwali morning, that is Sunday morning, I cannot take. Although it would be fine with most of the students because घर में ही तो क्लास करनी है, but still नहीं, वो हम नहीं ले सकते, वो मना कर दिया हमको बिल्कुल, that I cannot take. That is I was thinking about the extra classes while writing these answers. इसी वजह से प्लस माइनस हो जा रहा है मेरा. ठीक है, I hope everything is right. Friday I will have to schedule some extra classes. The difficulty is sir? Saturday, Sunday. हाँ बताएं. Sir, जब we don't have a counter ion, तो the charge on the coordination entity we don't write. नहीं, No वो charge. जीरो होगा, चार्ज जीरो चार्ज होगा. Okay. Yes, sir. Okay. All of you done writing? Mr. Nabi Salmi? Yes, sir. ठीक है, चलिए, that's it for today. अब एक ना बहुत छोटी सी चीज है, लिख लीजिए. This will not be asked in your board examination, but assessment में है, that is effective atomic number. And this is important for those who are preparing for NEET and JEE. Effective atomic number. Okay. So छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा टफ कंसेप्ट भी नहीं है. लिख लीजिए. What is effective atomic number?
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दिस विल बी इक्वल टू Z, that is the atomic number, minus the oxidation state or the oxidation number जो कि प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्लस 2 times the coordination number जो कि आपका सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना, coordination number that is a secondary valency. Now please see this Z क्या है आपका, atomic number of central metal atom, oxidations, when this is oxidation state, oxidation number है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि बेसिकली क्या होता है आपका, दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी जो कि हम लोगों ने अभी देखा है, प्राइमरी वैलेंसी. एंड व्हाट इज CN? CN is the coordination number that we will study in the next class, coordination number, but हमारे समझने के लिए it is the secondary valency, है ना, the number of ligands that we are having. Now for this I will tell you guys the most of the elements that we will be seeing are these elements, right? Sakti, V, Kra, Man, Pe, O, Ni, Ku, Zen. So scandium, it is having atomic number 21, this is 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Okay. Now if you are having something like this, cobalt, NS3, whole 6, and outside the square bracket you are having Cl3. ठीक है, तो यहाँ देखिए what will be the effective atomic number of this particular molecule. So what is the Z here? Tell me, what is the atomic number of cobalt? Atomic number of central metal atom? Atomic number of central metal atom, बोलिए guys. No idea. कोबाल्ट लिखा हुआ तो होगा ना, देखिए नहीं लिखा कहीं कोबाल्ट. Oh my God, लिख रहे हैं क्या आप लोग? अरे बोल क्यों नहीं रहे भाई, लिखना मत लिखो अभी प्लीज. लीव योर पेन aside and answer me, okay? देखिए ध्यान से, Z is what? 27. Okay. Now what is the coordination number? Tell me. Coordination number दिख रहा होगा आप लोग को, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है. सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है? हाउ मेनी? अरे बोलो भाई, 6. दिख रहा है किसी को? हाँ फिर 3 नहीं 6 है ना, देखो इनसाइड सेकेंडरी वैलेंसी ना, प्राइमरी वैलेंसी नहीं, सेकेंडरी. ये 6 है. नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर और द ऑक्सीडेशन स्टेट प्लीज सी. NH3 का तो 0 होता है, क्लोरीन की वजह से क्या होगा, 3 into -1 -3, एंड इन ऑर्डर टू काउंटर दिस -3 आपको कोबाल्ट में कितना लाना पड़ेगा, +3. सो कोबाल्ट इज हैविंग एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3. ठीक है. नाउ विल प्लग इन द फॉर्मूला EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इट इज इक्वल टू कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 -3 द ऑक्सीडेशन नंबर plus 2 into 6, right? So you'll be having 27 minus 3 is 24, 24 plus 12, this will be equal to how much? 36. All of you got this guys, yes or no, please tell me. Yes, sir. Effective atomic number, ठीक है. ये सिर्फ थ्योरी हम लोग कराते हैं ताकि आपकी जब जी और नीट की क्लासेस लगे तो वहां पे आप लोग सीधा सवाल करने पे आ जाए, है ना, not have to do the effective atomic number. How many of you guys attend the JEE or NEET classes? Tell me now. Rajita. So Rajita, you do the theory part also, या फिर mostly it is questions? So to be honest, I attended my first NEET class just yesterday, and we did a little theory and mostly just questions. So, what chapter? I requested to start with haloalkenes, so we did haloalkenes. Acha, haloalkenes we started. I think you have not done the initial parts of haloalkene with me, right? Yes, so that's why I asked for haloalkenes. Achha. If you are free on Saturday, Sunday, अच्छा Saturday, Sunday this पर class ही नहीं होगा यार. 11, 12 दो दिन छुट्टी कर दी. Both of these are Saturday and Sunday. Saturday, Sunday we have one batch, and उस batch का कोई class नहीं होगा फिर इस हफ्ते. That is one of the concern I'm having with this holiday.
सैटरडे छोटी दिवाली होती है, मतलब दिवाली से एक दिन पहले। Sir, do And you in any case take morning classes? what, Rajita? Do you take morning classes? मॉर्निंग आई डोंट हैव एनी बैचेस, कोई क्लास ऐसी, मतलब कोई ऐसा बैच है ही नहीं मॉर्निंग का, सारे Yes. शाम वाले बैचेस हैं। व्हाई? The 13th and 14th are holidays for me, that's why. 13th and 14th are holiday for you. Why? Yes, sir. I don't know, the school just randomly. 13th and 14th किसी और का भी है क्या छुट्टी 13th 14th को, बताओ भाई। ठीक है रजित, एक्चुअली ना 1-to-1 मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब हम एक बच्चे को क्लास कर, जैसे फिया को देखिए, फिया को हमने करा दिया था केमिकल काइनेटिक्स, अब फिया के लिए कोई बैच नहीं बचेगी, शी विल हैव टू डू केमिकल काइनेटिक्स इन सम अदर बैच आल्सो, मतलब बार बार, यू अंडरस्टैंड इट फिया, व्हेन वी आर डूइंग केमिकल काइनेटिक्स इन दिस बैच, है ना, Yes. अब तो Yes. उस टाइम शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो एक बच्चे को कराने का दिक्कत ये हो जाता है। तो टेल मी, एनीवन एल्स हु इज हैविंग हॉलिडे ऑन 13th and 14th? Sir, 13th is Sunday, right? 13th संडे नहीं है, 13th मंडे है। Acha, I think I have a holiday on Sunday, not 13th. संडे तो होगा, बिकॉज संडे इज ये ना हाँ, दिवाली। yes sir. नो, नहीं नहीं नहीं, 13th इज संडे मंडे ना, 13th मंडे होगा, हाँ, छुट्टी नहीं है किसी की। हम आपको क्यों छुट्टी दे रहे हैं, ऐसी छुट्टी है भाई रजिता? Yes, sir. Well, yeah. व्हाट? Yes, sir. I don't know. My friend just told me now, so even I'm